Good morning, students. Today we will discuss what is called as the pleura. Along with that, we will discuss the gross anatomy of lung. So let's start with pleura. Now, what is pleura? You must have heard of this term. What is pleura? Pleura is a serous membrane, a double-sac serous membrane, which is arranged as a closed invaginated sac. It's a double membrane, it's a serous membrane which invaginates the lung. It is in the form of a sac. Now to describe that, let us come to this diagram. This is a schematic diagram representing the primary trachea, the two principal bronchus, right and left, and this is a schematic diagram for lung. So in case जब embryological time होता है, there is a complete pleural cavity, pleuroperitoneal cavity, the whole big cavity when the embryo is trying to develop. At that time, this pleuroperitoneal cavity is a large sac, just like a balloon. उस balloon के अंदर एक तरफ से lung buds जो होते हैं, दोनों ट्रकिया से निकलते हैं, and these lung buds try to invaginate inside the balloon. For example, अगर ये इतना बड़ा ऐसा एक balloon है, गोल, और यहाँ से ये my fist is a lung bud. ये lung bud अगर इस sac के अंदर ऐसे जा रही है, तो obviously ये lung bud को चारों तरफ से वो sac cover कर लेगा. Now this sac is nothing but the pleura. Now this pleura is not single leg. वो समझने की बात है. अगर हमारे पास में पूरा spherical balloon है, उसको अगर हम एक तरफ से इंडेंट करेंगे, इंडेंट मतलब हम उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, तो वो बलून की कितनी लेयर्स बन जाएंगी? दो, राइट? एक तो जहां से मैं धक्का मार रही हूँ वो, और एक जो ऊपर का पार्ट है पीछे का वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? सो इट विल बिकम अ डबल वॉल्ड सैक इन विच द लंग ग्रोस, एंड एज द लंग स्टार्ट्स टू ग्रो, ये सैक कैविटी छोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी और लंग के ऊपर चिपक जाएगी. तो ये जो चिपकी हुई जो serous membrane है, this is nothing but the pleura, which surrounds the lung completely except at the hilum of the lung. So just we go through the diagram for the sake. This is the lung, closely applied to the lung. I said that this is a double-walled pleura. So closely applied to the lung, excepting at the hilum or the root. ये पूरा yellow जो है, this is one part of the pleura. We will name it. This is called as the visceral pleura. Anything which is close to the viscera is called as the visceral pleura. Okay? Anything which is close to the viscera is called as the visceral pleura. So this pleura which is applied very closely मतलब जो लंग के साथ चिपका हुआ पूरा हमें मिलेगा, that is called as the visceral pleura. I told you, imagine that balloon में एक तरह से इमेजिनेट होता हुआ lung, just imagine that. Now when the lung is imaginating into this, ये एक लेयर है जो इमेजिनेशन के टाइम पे पास में थी. अब क्या होगा? This will rotate on its own to form a second covering, and this is what forms the parietal pleura. एक ही बलून है, ये देखो, ये एक बड़ा सा बलून था, उस बलून के अंदर धीरे धीरे लंग बर्ड ने इमेजिनेट करना शुरू किया. उस लंग बर्ड में धीरे धीरे लंग ने इमेजिनेट करना शुरू हुआ, तो क्या होगा? ये यहाँ पे लंग बनना शुरू हुआ. अब ये चीज यहाँ पे दब गई, तो ये इसके साइड में हो गई. कैन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? दिस वाज द होल बलून. एक छोटा सा पार्ट लंग ब्लड यहाँ पर आगे डेवलप होना शुरू होगा. जैसे जैसे ये डेवलप होगा, ये इसकी कवरिंग होगी. तो ये जो कवरिंग है, ये वाली कवरिंग है, which is closely applied to the lung, that is the visceral pleura. Now next stage, if we take कि ये बड़ा हो गया लंग, तो obviously ये visceral pleura इस तरह से हो गया. Now next is what is this? When the lung is completely formed, ये जो पूरा sac था, ये छोटा हो गया. This becomes narrow. Now this is a schematic diagram, that is why we are showing so much of distance. Otherwise ये दोनों pleural layers जो हैं, एक दूसरे के पास ही होती हैं. They are close to each other. They are approximated to each other. They are not distant. Okay.
So from this embryonic stage, this is what we get as a final product. So what I'm trying to tell you is that this inner one is called as the visceral pleura. And this is what is called as the parietal pleura. They are continuous with each other at the hilum or the root of the lung. जहाँ पर प्रिंसिपल ब्रोंकस लंग में एंटर करता है, इस पार्ट को कहते हैं हाइलम और द रूट. Excepting at this point, lung is being covered completely by the pleura. Okay, the one which is close to the lung, which is approximated to the lung, is the visceral pleura. उसको पलट के घूम के जो वापस प्लूरल कवरिंग आती है, which is close to the thoracic cage. लंग कहाँ पर है? thoracic cage के अंदर. तो जो चीज लंग के पास में है वो है visceral pleura. जो बोनी केज के पास में है उसको हम कहेंगे parietal pleura. Have you understood? Now this visceral pleura is closely adhered to the lung. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. Now parietal pleura, which is the outer covering, it is divided into 4 parts for understanding purpose. For understanding purpose, the parietal pleura is described under 4 headings. Number 1, the part which is present above the first rib is called as the apical pleura. The part which is close to the heart, this side, center of the mediastinal part, this is called as the mediastinal pleura. The part which is close to the diaphragm is called as the diaphragmatic pleura, and the rest of the part is called as costal pleura. So you have 4 parts of the pleura: apical part, which is present above the first rib; mediastinal pleura, which is close to the heart or the mediastinum. You had the lectures of mediastinum earlier, so you know what is mediastinum. So the part of the pleura which is close to the mediastinum. Okay. So now let's just revise again quickly the visceral pleura and the parietal pleura. The visceral pleura is the one which is closely adhered to the lung. It is closely adhered to the lung, and it is also present in between the fissures. So it is the one which goes inside the lung fissures. Lung में fissures होते हैं which divides it into lobes. The right lung is divided into 3 lobes. The left lung is divided into 2 lobes by 2 fissures and 1 fissure respectively. So because in the indentation along with the fissures, the visceral pleura goes in. The visceral pleura is where the lung goes. The visceral pleura follows. Parietal pleura we described it under 4 headings. First rib के ऊपर का जो part है that is the apical or the cervical pleura. Then the costal pleura, that is surrounding the complete thoracic cavity. The mediastinal pleura जो heart की तरफ में है, बीच में, that is mediastinal pleura. And diaphragm के पास जो नीचे की तरफ में है, that is the diaphragmatic pleura. Now what is important in pleura is the tracing of the pleura. So let's go get started with how the pleura is to be traced. Exam में ये पूछते हैं प्लूरा को ट्रेस करके दिखाओ. These are nothing but surface landmarks, bony landmarks that you should know, through which you can trace the pleura. Clavicle. This is the first rib. Then I told you sternal angle. जहाँ से laterally अगर हम palpate करेंगे, so we will go into the second intercostal space. Remember the first? I told you how to trace for the apex beat of the heart.
these are the ribs, first to 7th. Now we are going to trace the pleura on both the sides, the right side and left side. So what is the first point for tracing the pleura? Number 1. Sternoclavicular joint on either side. Number 1. Sternoclavicular joint. This is the right side. This is the left side. From here, the pleura will start. Okay? We are going to trace the anterior margin now. First, from here, the pleura will go to the second point, that is the sternal angle on both the sides. दोनों तरफ में sternoclavicular joint से second point तक आएंगे, which is at the sternal angle. यहाँ से it will go up to the fourth on either side. Fourth costal cartilage या fourth rib. This is the third point. Now what happens? यहाँ हार्ट आ जाता है, यहाँ हार्ट आ जाता है. I told you about the area of cardiac dullness. Anteriorly just sternum के पीछे हार्ट आता है, which is the area of the cardiac dullness. I told you in the earlier lecture. So from here, that is the fourth costal cartilage or fourth rib, the pleura on the left side will deviate till the sixth, like an arch. On the right side there is no heart. I told you the right heart border is retrosternal. Sternum के पीछे होता है. So the fourth point on the right side is going to continue down till here, 7th. Now what we have traced here anteriorly is called as the mediastinal line of pleural reflection. This is called as mediastinal line of pleural reflection. मतलब सेंटर में प्लूरा कहाँ तक आएगा? अगर हम थोरेसिक कैविटी को खोल देंगे, स्टर्नम को खोल देंगे, रिब्स को अगर हम हटा देंगे, तो हमें प्लूरा कहाँ तक दिखेगा और हम कैसे पहचानेंगे कि प्लूरा की ड्रेसिंग कहाँ तक होगी? तो एंटीरियरली अभी ये जो हमने 4 पॉइंट्स जो गिने, इन चारों पॉइंट्स पे अगर हम प्लूरा के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, इसको कहते हैं मीडियास्टर्नल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन. इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें जो याद रखना है वो अलग अलग पॉइंट्स जो हैं. पहला पॉइंट कहाँ पे आता है? स्टर्नोक्लेविकुलर जंक्शन. सेकेंड पॉइंट हमारा आता है स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल क्या है? मेनुब्रियम और स्टर्नम के बीच का जो पार्ट है, जो उभार हमें यहाँ दिखता है. कल उस दिन देखा था हमने, यहाँ पे स्टर्नल नॉच होती है, उसके नीचे एक उभार होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नल एंगल. द सेकेंड पॉइंट इज एट द स्टर्नल एंगल. The third point is at the fourth costal cartilage or the fourth rib on either side. अभी तक तीनों points दोनों side में common थे. Now, because there is a presence of heart, there is presence of heart here. The pleura gets reflected. This pleura will now get reflected till the sixth costal cartilage. From 6th, now it will go laterally. It will go laterally. और right side में, क्योंकि heart नहीं है, heart is on towards the left hand side, इसलिए right side में the pleura will come down to the 7th. Okay, so this is called as the mediastinal line of pleural reflection. अब क्या होता है? Now this is the beauty of pleura. Now what happens? From this, the pleura will go to 8th, the level of 8th rib, and that is in the mid clavicular line. क्लेविकल की जो बीच का पार्ट, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो स्टर्नम के ऊपर बात कर रहे हैं. अब हमको स्टर्नम से इसको रिफ्लेक्ट करना है. हमें रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है? हमें प्लूरा को आगे से
भाई सामने तो हमारे शरीर पे प्लूरा की लाइन ये दिख रही है, यहाँ पर सीधी दिख रही है। अब यहाँ से हमें उसको लैटरली ले जाना पड़ेगा, फिर पीछे घुमाना पड़ेगा, राइट। प्लूरा हमें पूरा ट्रेस करना है कि प्लूरा कहाँ कहाँ पर है। तो जब ये 6th पॉइंट पे आ गया यहाँ पर, उसके बाद में हमें उसको लैटरली लेके जाना है। सो विच इज द नेक्स्ट लैटरल पॉइंट? इट इज द 8th rib in the mid clavicular line. This is clavicle, mid point of clavicle, उसके डायरेक्शन में 8th. Then we turn and we come down to the mid axillary level. Mid axillary level. Anterior axillary fold, posterior axillary fold. उसका जो बीच का पार्ट है, that is called as the mid axillary fold. So the next point from here, it will go to the 10th rib. Mid axillary line. This is mid clavicular line, and from here it will go posteriorly to the 12th rib. Now what is going to happen? From T1 to T12. So T12 जो वर्टिब्रा है पीछे, उससे 2.5 सेंटीमीटर लैटरल दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही T1 लेवल पे 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज द पॉइंट। ये 10th, then it will go to this point. Posteriorly, it will come here. This is the pleural reflection. So have you understood? I'll just try and tell you again. देखो क्या हो रहा है? प्लूरा क्या है? लंग को पूरा घेरा हुआ। घेरा हुआ से मतलब 360 degrees it is covering the lung. So we started with the anterior part. Anterior part में कहाँ था? Sternoclavicular junction, point number 1. उसके बाद में it came down to the sternal angle, point number 2. Then it came down to 4th costal cartilage, point number 3. From 4th costal cartilage, what happened? On the left side, it deviated till the 6th costal cartilage because of the presence of the heart. On the right side, it went down till 7th. This is an important MCQ question. Left side में 6th पे है, right side में 7th पे. This is an important difference between the tracing of the left and the right pleura. So you have to remember this. This is a important MCQ question. अब midline में तो आ गया. अब midline से हमें उसको पूरा पीछे तक trace करना है. So now we need a next point. So what is the next point? Bony landmark जो हम लोग usually pectoral region में use करते हैं, that is mid clavicular, mid axillary. So in the mid clavicular line, it is at the 8th rib. Mid clavicular line at the 8th rib. Both sides. Now everything is on both sides. Common. From mid clavicular, now it will go to mid axillary. यहाँ पर mid axillary line. That is at the level of 10. Now the diagram that I am drawing is coming up. So don't take it literally कि ये ऊपर जा रहा है. It is coming down. It is like this and then like this and then like this. So this is 6th. This is 8th. This is 10th and then this is 12th. This is at the costal cartilage. This is at the mid clavicular line. This is at the mid axillary line. And this is at the 2.5 centimeters from T12. So this is the complete tracing of the pleura behind. ये जो tracing है, जो हम नीचे की तरफ में कर रहे हैं, this is called as the diaphragmatic. Like we call this as the mediastinal line of pleural reflection. This is called as the diaphragmatic line of pleural reflection. मतलब प्लूरा जो है यहाँ पर अब मुड़ जाएगा और डायफ्राम से अपने आप को सेपरेट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं diaphragmatic line of pleural reflection. This one was called as mediastinal line of pleural reflection. और ये जो लाइन है यहाँ से ऊपर तक,
पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम के पास है। इसको कहते हैं वर्टिब्रल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब यहां से पूरा डेविएट होता है, टर्न होता है। दैट इज व्हाट इट मींस बाय प्लूरल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन।